Hello everyone, welcome to the last session of the day. I hope you all can hear me and see me. Please write yes in the chat if you can hear me and see me. Hello everyone, hello, good evening. Let's just wait for her sir to join in and then we'll start the session. View on Indeed 360 call, buying at 4. Crude oil falling due to tax on oil, but gas not falling, even tax more, just buying natural gas, it will not fall like crude. Guys, we will take up all the queries as soon as her sir is joining. So good evening everyone, welcome to the commodity natural gas pre-expiry live trading session where we'll try and see if we can get a profitable trade in natural gas. If not, we'll try our best कि हम किसी और commodity में भी trade दे सकें. We'll start with a quick outlook on natural gas and the current conditions. After that, we'll take up some stock queries. We'll cover the other commodities as well, and then we will try our best to give you a profitable trade while sharing some knowledge and asking some queries. So for today's expiry, we have Harsh Doshi sir. Last session was profitable with him, and he has this streak of profit session going on. Let's hope कि हमारी वो streak continue हो. Harsh sir, welcome to the session. आप ही का session है. We are all set. Introductions is all done. You can turn on your camera, share the screen, and then we are good to go. You are clearly visible. You are audible. And you can share your screen, and then we are good to go. Yes, Anuj, just give me a couple of minutes. I believe we'll start in next couple of minutes. Okay, sir. Meanwhile, guys, you can drop your queries in the chat. हम एक एक करके queries आपकी लेंगे. अगर हम आप queries ना ले पाए तो you can drop it on Stockholm. We'll be happy to take it up from there. I can see NG, gold, silver, queries around taxation on natural gas and oil. So we'll take all these queries. Guys, please note tomorrow at 4 p.m. we have a knowledge session on option strategies part 2 with our expert Mr. Arvind Beriwal. So don't forget to join that. We will be teaching you the strategies जो हमारे experts use करते हैं while analyzing and giving their stock recommendations or a trade. And tomorrow we have natural gas expiry session. कल total 5 sessions हैं हमारे. Yes, Anuj, I think we can start. Sure, so over to you. Okay. So, good evening, everyone. Welcome you all to Natural Gas Live pre-expiry session. So, I think we only have few of this session left for this month. After this, hope you all are enjoying our sessions and making good profit. So, ultimately, that is our objective, and we aim to, make you learn, and then with the help of that, the knowledgeable session, we also ensure that we take good profit trades. So, but definitely that we are seeing key overall natural gas is one of the most awaited, commodity because we have seen a lot of things evolving in and out in natural gas, and overall it has been pretty volatile, and the range has been quite a bit high because on daily basis we are seeing roughly around 10 to 15 odd rupees movement in natural gas. Very few of commodities is having such
sort of massive swings. So definitely अगर हम right direction में है, अगर हम proper analysis के साथ इसमें जा रहे हैं, तो loss करने के chances काफी कम है if we are clear about the direction. If we have set risk management, तो इसमें chances है कि एक momentum play out करने में काफी अच्छा होता है natural gas में. I think there are hardly any instrument available in commodity made be equity natural gas की तरह जहाँ पे दिन में 5% to 7% का move मिलता है. So definitely it is a trader's paradise commodity, I would say rather. So yes, welcome to the expiry session. Meanwhile, I'll share my screen. Yes, I believe it is visible now, correct? Yes, sir. Your charts are visible. Okay, thank you, Anuj. So yes, before starting with the technical perspective, we have seen that throughout the week there has been a lot of things evolving in commodities market. We saw that there was Trump's oath taking ceremony a few days back in the first half of the week, जहाँ पे हमने देखा कि crude oil में और gold और silver में काफी massive moves देखने मिले, especially crude oil. We have seen that from the ongoing upward trend, suddenly there has been a corrective move in crude oil. So there are multiple things evolving, and looking at the macro updates, there are rumors in market. एक uncertainty है कि जो tariffs की बातें market में हम सुन रहे थे regarding Trump, Trump putting tariffs on the imports of multiple countries. तो ऐसा देखा गया है कि चाइना में है जो 25% का मे बी इम्पोर्ट टैरिफ आ सकता है, इंडिया को 10 to 15% का इम्पोर्ट टैरिफ लग सकता है. तो काफी सारे रीजन है जिसकी वजह से जो भी बाकी कमोडिटीज है उसमें हलचल देखने मिली है, स्पेशली क्रूड ऑयल, गोल्ड एंड सिल्वर, एंड ऑफ कोर्स नेचुरल गैस का तो है ही है, बिकॉज उसका जो है वो इंटरनल रीजंस भी काफी सारे हमने बीच में सुना था कि यूएस ने रशिया में सैंक्शंस लगाने की बात की, जिसके चलते एनर्जी मार्केट को लेके मूवमेंट थी, नेचुरल गैस में एक अच्छा तेजी बनते हुए देखा. सो नेट हमने काफी सारी थिंग्स प्ले आउट होते हुए देखी मैक्रो वाइज. तो अभी हम देख लेते हैं कि टेक्निकली क्या कुछ हो रहा है. सो डेफिनेटली विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर interesting chart of natural gas in multiple time frames. So to begin with, natural gas hourly chart, we have seen that after a sharp sell off in natural gas, I believe last week में अच्छा sell off हुआ था, and from the start of this week एक जो fall है after the gap down opening on Monday, हमने देखा कि किस तरीके से एक fall है वो रुकते हुए दिखा है. So technically speaking, there are a couple of reasons. पहले तो हमने देखा कि एक broad sell off के बाद prices ने initially try किया breakout देने का, but eventually थोड़ा weakness था, hold नहीं किया prices ने, and it was followed by a new low. तो एक नया लो भी बनते हुए हमने देखा कि एक false breakdown स्पेशली यहाँ पे दिया गया. अगर हम ये एक ओवरऑल ब्रॉड हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली एक सॉर्ट ऑफ ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, बट इफ वी आल्सो एनालाइज द चार्ट विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम इंडिकेटर व्हिच इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, जो हम ऑलमोस्ट हमारे सारे सेशंस में डिस्कस करते हैं, तो एक इंटरेस्टिंग चीज हमने स्पॉट की कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर आरएसआई जो है उसमें एक नया लो नहीं बनते हुए दिखा. Although prices were making new low, RSI was making new high. तो एक इंडिकेशन डेफिनेटली मिला था कि prices might stop the fall and the downtrend could stall going forward, and it did play out that way. RSI ने नया हाई किया, prices का fall जो है वो रुका, and उसके बाद although prices एक narrow range में थे, but finally
after a successive bullish reversal. So this reversal pattern is important because it is one of the key bullish reversal pattern. It is spotted on regular basis frequently on multiple time frames, and उसका impact भी जो overall होता है एक next leg of rally जो आती है bullishness जो generate होता है reversal pattern से वो काफी intense है. We can see that on hourly chart after forming strong bullish reversal there has been a confirmation as well. RSI को हमने देखा, it was trending upwards, prices were leading in upward momentum, and slowly and steadily somewhere फिर से ट्रेंड चेंज होते हुए देखा. सो अगर हम पकड़ के चले कि कल सेकंड हाफ में जब ये फॉल रुका एंड स्ट्रॉन्ग बाइंग आया, 330 132 was acting as previously as a strong resistance. Once that level was broken, there has been sort of explosion in prices. एक एकदम शार्प रैली बनते हुए दिखी इन द लेटर ऑफ द सेशन. काफी अच्छा मूव था कल का सेकंड हाफ में नेचुरल गैस में. और आगे भी आज हमने देखा कि जो ओपन हुआ वो गैप अप हुआ बिकॉज यस्टरडेज क्लोज ओवरऑल डेली वाइज एंड ऑन द इंट्राडे चार्ट वाज प्रीटी स्ट्रांग. यहाँ पे कहीं ना कहीं एक नियर टर्म रेंज जो भी फॉर्म हुआ था वो भी ब्रेक होते हुए दिखा, एंड अल्टीमेटली प्राइसेस इज नाउ रिजेंबलिंग स्ट्रांग बाइंग इंटरेस्ट. तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि लुकिंग एट द करंट सेटअप, एटलीस्ट जब तक प्राइसेस 334 335 लेवल के ऊपर होल्ड कर दे, यहाँ पे सेल में जाना तो एडवाइसेबल बिल्कुल नहीं रहेगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डेफिनेटली जो सेटअप है वो बाइंग ऑन डिप्स का है. करेक्ट. सो लुकिंग एट द अर्ली चार्ट we have seen that consistently, although first half of the session was little sideways in the narrow range, but अभी कहीं ना कहीं prices try कर रहे एक upward break करने का. We also have a natural gas inventory today by the way. So और ऊपर से expiry भी है कल, तो overall काफी focus में रहेगा natural gas का counter, and थोड़ा actionable भी लग रहा है. बस ये चीज ध्यान रखनी because आज डेटा है तो जो भी हम ट्रेड लेंगे उसमें रिस्क एकदम सही से मैनेज करना, बिकॉज मैसिव स्विंग्स देखने बिल्कुल मिलेंगे. तो अगर हम अर्ली चार्ट की बात करें तो आज के लिए हमारा स्ट्राइक टू फोकस रहेगा 350 का. 350 is going to be our strike to focus in natural gas. 350 call option. I believe it looks to enter on the trade as well. Currently natural gas futures is quoting at 346. 350 का जो कॉल ऑप्शन है वो हमारा स्ट्राइक टू फोकस में है. करंटली 350 कॉल ऑप्शन इज कोटिंग एट 7.10. सो डेफिनेटली एक अपसाइड मूव बिल्कुल मिल सकती है हमें यहाँ से. अपसाइड के लिए एटलीस्ट ऑन द इंट्राडे चार्ट it looks achievable somewhere around 350 to 353 अगर ये मोमेंटम अपसाइड में कंटिन्यू करता है तो. बट डेफिनेटली अभी जो है वो थोड़ा स्ट्राइक टू फोकस हमारा क्लियर है कि कॉल ऑप्शन में रहना है, बट व्हेन टू इनिशिएट द ट्रेड वो थोड़ा एक उसके लिए हम अभी रुकेंगे, बिकॉज एक मोमेंटम अगर मिले तो डेफिनेटली वी कैन एंटर. तब तक इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस अनुज वी कैन definitely discuss that. Sir, is pattern formed at 3 p.m. to 4 p.m. also bullish engulfing? 3 p.m. to 4 p.m. मतलब Yes. on which time frame? Can you check the time frame? They've just written this. I guess जो आप चार्ट शो कर रहे थे नेचुरल गैस स्ट्राइक का, उस पे पूछ रहे हैं वो. ओके, तो आई थिंक 3 से 4 बजे के बीच में जो मूवमेंट आई है एक्चुअली इट रिजेंबल्स टू बी लाइक अ बुलिश एंगल्फिंग, बट इसका जो वेटेज है बुलिश एंगल्फिंग का यहाँ पे हम उसको थोड़ा कम देंगे या एक बार के लिए इग्नोर भी कर सकते, because the beauty about the reversal pattern is that where it is forming is also important.
यहाँ पे हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, सपोर्ट जोन होना जरूरी है, ये एक सपोर्ट जोन था स्ट्रॉन्ग, 320 का लेवल था, वो एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल मार्क भी था, वो लेवल पिछले कुछ दिनों से वो इनफैक्ट ब्रेक ही नहीं कर रहा था सिंस पास्ट 10 to 12 डेज, एंड वहां पे फॉर्म होने के बाद आरएसआई में भी थोड़ा एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने मिला. So there are multiple confirmations, and where it is forming is also important. अगर सपोर्ट पे फॉर्म हो रहा है तो उसका वेटेज है, उसका टॉलरेंस है, वो ज्यादा होता है. यहाँ पे एज सच ये दिख रहा है उस तरीके से, मतलब इट शुड नॉट बी रूल्ड आउट, बट हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि इट इज फॉर्मिंग इन मिडल ऑफ द ट्रेंड. इफ इट फॉर्म्स समवेयर इन बिटवीन, तो इसमें थोड़ा जो एक क्वेश्चन के, मतलब इसको हम एग्जैक्ट प्रॉपर रिवर्सल नहीं बोल सकते. आई वुड सजेस्ट कि इट इज नॉट अ प्रॉपर रिवर्सल, बस खाली वो उस तरीके से अपीयर हुआ. Sir, view on NG 360 call buying at 4 rupees. $360 call buying at 4. I think 360 का कॉल अभी चल रहा है somewhere around 3.5. So I would suggest कि in case अगर आपने एंट्री किया है कॉल ऑप्शन में तो स्टॉक मेंटेन करके चलना, एंड अपसाइड यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली इंटैक्ट है. अगर प्राइसेस 340 के ऊपर आज के दिन होल्ड करता है, यहाँ से 3-4 रुपए का मे बी कोई डिप अगर आए तो आ सकता है, बट ओवरऑल बायस एटलीस्ट फॉर टुडे इज पॉजिटिव. 340 के नीचे थोड़ा करेक्टिव मूव आ सकता है, बट ओवरऑल स्टैंड्स बाइंग ऑन डिप्स का ही है. वहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मे बी फिर से प्राइसेस एक नया लेग ऑफ रैली स्टार्ट करे. बट इन केस यहाँ से अपसाइड में अगर 350-51 पे प्राइसेस टेस्ट करने आता है, यहाँ से 500 रुपए का रैली आता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आपका जो कॉल ऑप्शन खड़ा है वो आप बुक कर सकते हो. बट अभी के लिए वेट करो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज दैट ट्रेड. Sir, can you share your views on crude oil? Crude oil falling कर रहा है because of the tax on oil, but NG नहीं. This is one of the queries which we have received. Okay. So yes, friends, looking at 4-hourly chart in crude oil, we can see that after a prolonged uptrend, the clear uptrend, eventually slightly RSI started indicating divergence. We have seen series of divergence wherein prices were rallying, but RSI didn't support the price rise, and there was the exhaustion point जहाँ पे prices ने भी थोड़ा एक halt लिया, एक caution दिखा, and we have seen this corrective move, a very nice corrective move. अगर हम डेली चार्ट में देखें स्पॉट क्रूड ऑयल का चार्ट, सो ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल बनते हुए हमने देखा है. इसको हम कहेंगे डार्क क्लाउड कवर. So basically it is a bearish reversal pattern. It consists of only this two candle. It is a two candlestick reversal pattern. एक उसके बाद it was followed by a weak close also. नेक्स्ट डे भी हमने देखा कि थोड़ा सेलिंग था, तो एटलीस्ट कंफर्म हो गया कि यहाँ पे एक बार के लिए जो ट्रेंड है वो तो डेफिनेटली वीक होते हुए दिखा है और रुकने वाला है ये अपवर्ड ट्रेजेक्टरी जो है. तो एक साइंस क्लियर थे. एंड दूसरा ये था कि आरएसआई में भी डाइवर्जेंस देखने मिला. इवन आरएसआई वी डिस्कस्ड जस्ट रीसेंट पास्ट की एक नया हाई नहीं बना, ऑल्दो प्राइस से बनाया. So somewhere down the line, there were multiple tools which were indicating signs of caution and weakening of the current uptrend, and we could see that eventually prices did fell. And glad to share friends, आपको ट्रेड ये शायद ना मिला, बट हमने पोजिशनल सेल ट्रेड भी लिया था, एंड हमने पिछले 2 दिन से थोड़ा बेरिश व्यू भी बनाया था. हमारा डाउन साइड में 75 और लेवल का टारगेट था, एंड डेफिनेटली वहां पे अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है.
So at least we are expecting यहाँ पे अगर 75 के अराउंड अगर ये लेवल होल्ड करता है तो एक रिलीफ रैली बिल्कुल आ सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली थोड़ा जो ट्रेंड है मीडियम टर्म का वो पॉजिटिव है, जो करेक्टिव मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो प्ले आउट हो चुका है। तो यहाँ से आगे चल के थोड़ा एक रिलीफ रैली 90 to 100 रुपीस का बिल्कुल ऑन द नियर टर्म देखने मिल सकता है, टेस्टिंग एट 66, 40, 50 लेवल ऑन द हायर साइड, प्रोवाइडेड 6500 ब्रेक नहीं करता है तो ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है किसी को अगर लॉन्ग साइड पोजीशन बिठानी हो तो, बट ज्यादा एग्रेसिवली मत जाना, थोड़ा कॉशन के साथ चलना। तो डेफिनेटली 6500 अगर होल्ड करता है तो अपसाइड में 66, 40, 50 लेवल टेस्ट करने आ सकता है, तो थोड़ा साइडवेज टू हायर रेंज है व्यू नियर टर्म। Sir, is there a correlation between crude and natural gas? As such, correlation wise, if you see, natural gas itself has its own reasons to move. May it be temperature or may it be cold weather conditions, their own inventory data. तो ये कुछ फैक्टर्स है जिससे वो थोड़े कम रिलेट होते हैं क्रूड और एनजी एक दूसरे से, until and unless there is something a drastic change macro wise, जैसे अभी जिस तरीके से रशिया में सैंक्शंस पुट हुए थे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो एनजी और क्रूड को एकदम से पॉजिटिव हो गया, डायरेक्ट हो गया, बट नॉट नेसेसरी कि हमेशा साथ में चले, इनका रिलेशन मतलब एकदम सिचुएशनल है, सो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस इट मूव्स ऐसा। Sir, can you please give an overview on gold and silver? I guess हमारे मंडे को एक्सपायरी भी है। Yes, Anuj. 27th को है एक्सपायरी गोल्ड मेगा एंड मिनी। Meanwhile, I was thinking, looking at the price action in crude oil, if we could spot any good trade. Okay, friends. So, looking at the overall setup in silver, we can see that it is stuck in the broad range. Actually, silver has been, little dull since past a week now. थोड़ा एक मूवमेंट है वो एकदम सा रेंज बाउंड हो चुका है. इट इज लिटिल सरप्राइजिंग फॉर सिल्वर बिकॉज इसके जो मूव्स होते हैं वो काफी वोलेटाइल होते हैं दोनों साइड, बट अभी थोड़ा जो है वो एक साइडवेज रेंज में चल रहा है. लुकिंग एट द करंट सेटअप एज सच कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है बिकॉज सपोर्ट से बाइंग भी आ रही है एंड रेजिस्टेंस से फॉल भी आ रहा है, तो एक रेंज बाउंड मूव गोइंग फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट डेफिनेटली अगर 89,900 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह आगे चल के एक्ट करेगा. इफ प्राइसेस ब्रेक 89,900 ऑन द लोअर साइड तो वी कैन एक्सपेक्ट इट टू टेस्ट 87,500 86,000 ऑन द लोअर साइड. बट अगर 89,500 ब्रेक नहीं करता है, 89,900 अगर ब्रेक नहीं करता है एंड उसके ऊपर अगर प्राइसेस ट्रेड होते हैं तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट इट टू टेस्ट दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई हुई है. तो आगे चल के नीचे में 86 एंड ऊपर में 93,594 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे टू वॉच आउट फॉर. बाकी तो साइडवेज मूवमेंट है तो सिल्वर में थोड़ा नॉन डायरेक्शनल है, इतना एज सच कोई क्लैरिटी नहीं है, बट डेफिनेटली इन गोल्ड एक सेटअप जो है वो काफी पॉजिटिव है एंड द स्ट्रेंथ इज क्लियरली there because we could see that after the break of this triangular breakout, overall
prices are holding well. 2 दिन पहले during the Trump inauguration and all एक dip देखने मिला था जरूर, but 78, 400, 500 is now acting as a strong support. So as long as prices are holding above 78, 500, upside में 80,000 का level test बिल्कुल कर सकता है. अगर immediate support किसी को चाहिए तो 79,000 पकड़ के चल सकते हैं. And any sustainable break above 80,000, could most probably take the prices towards the new highs and एक fresh move भी देखने मिल सकता है. But too early to say. I'm waiting for that breakout. But अभी के लिए अगर कोई व्यू बना है तो 79,000 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो अपसाइड में 80,000 टेस्ट करने आ सकता है नियर टर्म में. Because almost 3 to 4 months का हाई बना है गोल्ड है, तो डेफिनेटली व्यू जो है स्टैंड्स जो है वो बुलिश है एंड ओवरऑल बाइंग ऑन डिप्स का व्यू रहेगा एज फार एज गोल्ड इज कंसर्न्ड. Sir, NG is forming M double top pattern, so expecting it to fall. What is your view? Not as such a sharp fall, but yes, because resistance से थोड़ा एक restrictive move बिल्कुल देखने मिला है. So we can expect कि एक बार के लिए डाउनसाइड में 340 का लेवल मे भी पहले टेस्ट करना है, but not in view to give a bearish stance or a bearish trade, because अपना overall bias positive है, तो we will wait for it to test 340. वहाँ पे वो लेवल टेस्ट करने के बाद क्या जनरली होता है, and based on that we can enter on the call side or the long side, but not as of now. थोड़ा एक नीचे का व्यू, मतलब नीचे में कोई लेवल अगर टेस्ट करने आता है तो विल रिव्यू देन अगेन, बट अभी के लिए कोई बेरिश व्यू तो बिल्कुल नहीं बन रहा है सच, और ट्रैजेक्टरी अपसाइड का ही है. Guys, please note we have not given any trade as of now. Natural gas 350 call is on our radar. Waiting for 2 more minutes, looking for a strong close in crude oil. If not natural gas, then we can see if we can find any good trades in crude oil. Because I think ये अभी कुछ टाइम से हो रहा है कि क्रूड के एक्सपायरी में हमें नेचुरल गैस में ट्रेड मिल रहा है, एंड नेचुरल गैस के एक्सपायरी में मे भी कोई दूसरे कमोडिटी में ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. समटाइम्स इट डज हैपन बिकॉज जो व्यू कभी कभी प्ले आउट उस पर्टिकुलर टाइम में नहीं भी होता है. सो इट इज बेटर टू वेट रादर देन टू रश फॉर द ट्रेड. I think the setup in crude oil is little interesting because overall prices are showing sort of recovery and एक strong rebound हमने देखा. अगर आज का स्ट्रक्चर देखें तो higher low का जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है, एंड आफ्टर द गैप डाउन ओपनिंग टुडे ओवरऑल इन द सेकंड हाफ थोड़ा बायस पॉजिटिव रहा है. तो डेफिनेटली इन क्रूड ऑयल इफ वी कैन सी तो 6,600 का जो कॉल ऑप्शन है दैट वुड बी इन फोकस. So yes friends, I think the trade in crude oil looks more convincing, and definitely in this ongoing recovery
expecting prices to test at least 6,600 on the higher side. So overall buying on dips का stance है crude में 65, 30, 20 और level अगर hold करता है तो एक view बिठा सकते हैं. But I would suggest that it would be little risky trade. Because prices are still in the range, एक range break नहीं हुआ है. चाहिए तो हम wait करेंगे, let it break above 65, 70. Because अगर clarity नहीं है, अगर unclear है overall direction अभी के लिए तो थोड़ा wait करेंगे. If you look at gold intraday chart, we can see that एक broad range में trade कर रहा है, support पे buying, resistance में book profit. एक directional move थोड़ा missing है. तो we can see कि chart जो overall है काफी सारे commodities के एकदम flattish है. Silver में एक selling on rise का अच्छा move देखने मिल रहा है. But overall, I believe still trade लेने जैसा अभी as such कोई setup not finding it. Sorry to say, but I think we'll wait for the trade. तब तक कोई दूसरे questions है तो definitely we can take Anuj. Sir, should we long FIF future of natural gas? Natural gas में in case अगर ये rally जो है वो hold करता है 335 जैसे हमारा discussion हुआ ये अभी session में 330 से लेके 335 का नियर टर्म सपोर्ट है एंड 320 का ओवरऑल सपोर्ट है. 320 के नीचे जो है वो व्यू टोटली चेंज हो जाएगा बिकॉज दैट इज आर समवेयर द नेगेशन पॉइंट. तो अगर प्राइसेस होल्ड करते 320 के ऊपर तो अपसाइड में फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है 361, 62 और लेवल पे एंड सेकंड 370. तो डेफिनेटली ये दो लेवल अपसाइड में देख सकते हैं. नॉट एक्सपेक्टिंग एकदम से रन अप एज लॉन्ग एज प्राइसेस इज नॉट ब्रेकिंग अबाउ 370. एक बार के लिए ऊपर में अगर 370 का लेवल निकले तो थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आएगा. सो आई वुड सजेस्ट दैट फॉर नेक्स्ट मंथ वेट फॉर वन डे और टुमारोज क्लोज. उसके बाद थोड़ा मे बी बेटर क्लैरिटी मिले. आई वुड सजेस्ट टू वेट फॉर नाउ. Sir, are we waiting or I guess that will be all for today's session because आज दोपहर में भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिल पाया. I was hoping कि हमें commodity में जरूर मिले but saving capital is more important, I understand. Yes, Anuj, because that is what the beauty of trading is that most probably we would not be finding the trades daily. But अगर हम wait करते हैं right setup के लिए opportunity के लिए wait करते तो maybe we can find good trade. But yes, ध्यान तो है monitor कर रहे closely. But looking at the current setup, you know, as such कोई trade initiate करने जैसा नहीं लग रहा. So थोड़ा I would, you know, wait. I think एक 2 मिनट एक होल्ड करते हैं. If we find any, sure, sir. Definitely initiate. Otherwise, we would wrap up. Meanwhile, friends,
सिल्वर में ध्यान रखना है, इंट्राडे चार्ट थोड़ा वीक होते हुए दिखा है, तो अगर कोई रिलीफ रैली आती है तो थोड़ा सेलिंग ऑन राइस इसमें बिठा सकते हो, लुकिंग एट द इंट्राडे चार्ट विद द डाउनसाइड टारगेट ऑफ 89,900 बिकॉज सेटअप थोड़ा वीक होते हुए दिख रहा है. Sir, I guess we can take 2 or 3 more queries and then we can end the session. Sir, is it good to plan target based on delta values? Based on the delta values, yes. So basically in delta, the viewpoint is looking at the option price premium. We find delta and delta neutral strategies, delta hedging strategies. There are few of the strategies जो option traders follow करते. One can look to follow that strategies and based on the delta, but with better understanding and with the help of backtesting, अगर it is working out for you with your style of trading, then why not? But maybe it's not suitable for everyone, so it is little subjective. So it is all depending upon your grip you have on that sort of trading style. Sir, apart from temperature, would NG have impact based on Trump taking presidency? Actually, NG within itself is such a volatile counter that sometimes all such external reasons sometimes gets neutralized, क्योंकि NG का खुद का ही इतने सारे reasons होते हैं ना मूवमेंट के लिए, तो ये सारे reasons का कभी-कभी impact नहीं होता. But yes, important thing to share today, we have natural gas data and crude oil inventory. So definitely ये दो डेटा की तरफ ध्यान रखना है, ये दो डेटा को मॉनिटर करना. एक्सपेक्टेशंस है कि नेचुरल गैस का जो डेटा है प्रीवियसली इट वाज -258 बिलियन एंड एक्सपेक्टेड है कि -270 बिलियन तक आ सकता है. अगर ज्यादा नेगेटिव आता है तो डेफिनेटली प्राइसेस के लिए इसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव होगा फॉर नेचुरल गैस. ज्यादा कम तो प्राइसेस के लिए पॉजिटिव होगा. सॉरी, अगर डेटा ज्यादा नेगेटिव आता है तो लेट्स से -270 भी एक्सपेक्टेड और -280, 290 या 300 के आसपास आए तो डेफिनेटली प्राइसेस के लिए इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा. बट इफ इट इज -200 और 250 तो थोड़ा प्राइसेस के लिए नेगेटिव हो सकता है बिकॉज वो कम नेगेटिव है. अगर ज्यादा नेगेटिव आता है देन इम्पैक्ट इज पॉजिटिव फॉर प्राइसेस. सो अकॉर्डिंगली इसका जो है व्यू प्ले आउट ये बेसिस पे भी हो सकता है. तो ये डेटा 9 बजे आएगा तभी प्राइसेस मॉनिटर करना, एक डिसाइसिव मूव देखने मिल सकता है. मे बी मार्केट इज वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ मूव्स लाइक दैट, इसीलिए अभी थोड़ा मूवमेंट जो है वो डल हो गया, ड्राई हो गया. यस फ्रेंड्स, आज कोई ट्रेड तो नहीं दिया बट हमारा डिस्कशन हुआ था सिल्वर में एंड सिल्वर इज ऑलरेडी मेकिंग न्यू लोस. तो ओवरऑल सिल्वर में फोकस रख सकते हैं और उसमें क्लियर थोड़ा डायरेक्शन मूव बनते हुए दिख सकता है. अगर 90,700 के लेवल के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड करे
तो मे बी 89,900 टच करना आ सकता है. तो आई थिंक आज के लिए यही एक व्यू है जो स्ट्रॉन्ग बैठ है, तो इसमें ध्यान रख सकते हो. So guys, that will be all. Apparently, we couldn't get a decent trade in the entire day. Although we shared some intraday trades in the morning, which went good, but we couldn't get an option trade on either commodity options. So I guess that will be all. Thanks a lot, everyone. Thanks a lot, Harsha, for taking up the queries and sharing it in a very detailed way. Hope to see you again soon, and we'll definitely plan a knowledge session with you as well. Thank you, everyone. Sure.